Hello, students. I welcome you all to today's session. As we all know, we have been doing the chapter Events, Tries, and O Level by Colin Dexter from your book Vistas. In the last video lecture, we had completed the explanation of the text, and today we will do a quick discussion of the question answers given towards the end of the chapter, that is on page number 92. I hope you have gone through the text of the chapter at least once by now. If you have done so, I'm sure you will be able to guess most of the answers. Okay, so we all hopefully remember the story and the plot. So let's begin with a question. The first question says, reflecting on the story, what did you feel about Evans having the last laugh? So when we look back upon the story, we see that Evans had the last laugh, which means that he had ultimately won this game that was going on, this game of being caught and running away. So between the police and the criminal. So Evans eventually had the last laugh means that he had ultimately fooled the police and outsmarted them. Primarily the main police who was the governor. In the race between the police and the culprit, culprit that is Evans was successful in running away by executing a very clever plan, and so he had the last say or the last laugh. The game was won by him in the end, and after that there was no more chance left for the police to do anything. So this means that eventually in the end who had won this game, it was Evans. Okay, so Evans had the last laugh. After that, there was no more chance given to the police to do anything else. So I hope you have the answer clear in your minds. Okay, so moving on to question number 2. It says, when Stephens comes back to the cell, he jumps to a conclusion and the whole machinery blindly goes by his assumption without even checking the identity of the injured McLeary. Does this show how hasty conjectures can prevent one from seeing the obvious? How is the criminal able to predict such negligence? So this question is asking us, ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है that Stephens जो पुलिस ऑफिसर था, after he had taken the invigilator, that is McLeary, to the prison gate. आपको याद होगा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद स्टीफन्स को ये ड्यूटी दी गई थी कि वो इन्विजिलेटर मैक्लियरी को गेट तक छोड़कर आएगा. सो दिस ड्यूटी आफ्टर दिस उसने क्या किया, वो एक बार गया प्रिजन चेक करने के लिए टू सी इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन. और उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया था, आई विल गो फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी. सो व्हेन ही गोज एंड लुक्स इनटू द प्रिजन, व्हाट डज ही सी? ही सीज दैट एक इंसान बहुत मतलब ही इज़ स्प्रेड आउट ऑन द चेयर, और चेयर पे वो बिल्कुल लेटा हुआ है, सॉर्ट ऑफ इन अ मैनर विच इंडिकेट्स दैट ही हैज़ बीन हर्ट. उसको उसके ऊपर वार किया गया, उसके ऊपर हमला हुआ है. ओके, सो वो देख कर लगता है कौन है, ही इज़ द इन्विजिलेटर, दैट इज़ मैक्लियरी. बिकॉज उसने वैसे ही पूरा ड्रेस पहना हुआ है, वैसे ही पार्सन प्रीस्ट का कॉलर उसने पहना है, कोट पहना है. ओके, एंड हीज हेयर इज़ लाइक दैट. सो उसका पूरा जो अपीयरेंस होता है उसको देख के स्टीफन्स को लगता है दैट इट इज़ द इन्विजिलेटर हिमसेल्फ. और जो जिसको मैं अभी अभी बाहर तक छोड़ कर आया हूँ, ही वॉज नॉट द इन्विजिलेटर, एक्चुअली ही वॉज इवेंस जो भाग गया है. ओके, एंड इवेंस ने भागने से पहले क्या किया, ही हैज़ हर्ट दिस इन्विजिलेटर. He has hit him with some instrument, some weapon sort of thing, जिसकी वजह से उनके सर से खून बह रहा है. So ये पूरा सीन जो है ये स्टीफन्स अज्यूम कर लेता है. ओके, ही डजंट चेक थिंग्स कि वाकई में वो कौन है, उसको कैसी चोट आई है. बिफोर थिंकिंग ऑल दिस वो बिल्कुल हेस्टी कंक्लूजन पे आ जाता है, और उसके साथ साथ बाकी जो ऑफिसर्स वहाँ आते हैं, even they are hasty in their conclusion. So without even checking the identity of McLeary, what does the situation end to? It leads to all that happens afterwards. भाग कर जाना इवेंट्स को पकड़ने के लिए, एंड अंदर में जो मैक्लियरी हैं उनको
उनको हेल्प करना, टेक हिम टू द हॉस्पिटल एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनसे क्या होता है, इवेंट्स को भागने का और मौका मिलता है. अगर उसकी आइडेंटिटी पहले ही चेक कर ली जाती उस प्रिजन के अंदर, सो इट वुड नॉट हैव लेड टू दिस एंड टू द स्टोरी. सो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि क्या ऐसे जो हेस्टी कंजेक्चर्स होते हैं ये हमें ऑब्वियस चीज़ों को देखने से रोक देते हैं. ओके, सो येस, दिस रियली हैपन्स इवन इन आवर रियल लाइफ्स. यू विल सी दैट whenever you are in a hurry, जैसे कि हम एक इंग्लिश की proverb को भी सुनते हैं, that is haste makes waste, which means that when we do things hastily or rashly without even giving a thought to that situation or the gravity of the situation, then it leads us to losses of different kinds. Okay, तो जल्दबाजी में कोई भी काम करने से हम obvious चीज़ों को जो हमारी नज़र के बिल्कुल सामने हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, या फिर ऐसा कहें कि जल्दबाजी में बिना ठहरे बिना सोचे समझे सिचुएशन की ग्रेविटी को बिना समझे जब हम कोई भी कदम उठाते हैं तो हम ऐसी चीज़ों को भी नहीं देखते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने होती हैं. ओके, जो हमें उस एक्शन को करने से रोक सकती हैं, जो हमें और क्लूज दे सकती हैं. ओके, सो बिकॉज उस वक्त हमारा जो माइंड होता है वो कहीं और होता है. इट इज़ नॉट रियली कॉन्शियस, इट इज़ इन अ हरी. ओके, सो द सेम थिंग हैपन्स व्हेन द पुलिस ऑफिसर स्टीफेंस assumes all the wrong things. Okay, so obviously all these hasty conjectures do lead us to avoid seeing things that are obvious. Okay, so the second part of the question asks us, how is the criminal able to predict such negligence? जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इन चीज़ों को कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वो चेक नहीं करेगा, वो इस कंक्लूजन पे आएगा, फिर वो इसको ढूंढेगा एंड थिंग्स लाइक दैट. सो ये क्रिमिनल्स इस चीज़ों को कैसे पहले से पता उनको होता है या वो इसको प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? सो इसका आंसर क्या होगा, दैट जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दैट दे प्लान एवरीथिंग. ओके, उनका जो भी प्लान होता है वो बिल्कुल सोचा समझा हुआ प्लान होता है. ओके, क्रिमिनल्स आर एबल टू प्रिडिक्ट बिकॉज दे सी थिंग्स इन क्वाइट डिटेल्स. क्योंकि इस स्टोरी में भी हम देखते हैं इवेंट्स who was the prisoner who ran away from that jail, he was also in that prison for around 6 months. और 6 months उसने सबको ऑब्जर्व किया कि कौन किस वक्त आता है, किस वक्त जाता है, किसका कैसा बिहेवियर है, किसका कैसा का मूड होता है. सो ही ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग वेरी in quite details, and after that he planned everything, all the possibilities, all the probabilities, कौन कब कैसे एक्ट करेगा. ओके, कि कौन इससे सिंपथाइज करेगा, कौन इससे सिंपथाइज नहीं करेगा. सो हियर ऑल्सो इवेंट्स had observed everything and accordingly he planned everything, and we should not forget that he was very clever also and intelligent. प्लानिंग के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत तेज था. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैड रन अवे 3 times अर्लियर. सो वो पहले भी 3 बार भाग चुका था और जेल से. सो ये सारा कुछ मिला करके ही वॉज एबल टू प्रिडिक्ट दिस नेग्लिजेंस थ्रू हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस, थ्रू हिज ड्यूरेशन ऑफ स्टे in this prison, Oxford prison, and also by his wit and his intelligence. So all this combined in allowing him to predict all this, and so he easily ran away. So ये सारी जो खामियां हैं, ये सारी जो weaknesses और ड्रॉबैक्स हैं, ये ह्यूमन नेचर में होते हैं, जल्दबाजी में काम करना. और जो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत पॉइज्ड लोग होते हैं वही इन चीज़ों को संभल कर ऑब्जर्व करके करते हैं. सो इवेंट्स हैड नोटिस्ड कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है इतना सोचने वाला. सो ही अल्टीमेटली वॉज सक्सेसफुल इन रनिंग अवे फ्रॉम दिस प्रिजन. Okay, so I hope you have got the answer. Now we'll move on to question number 3. What does question number 3 say? What could the governor have done to securely bring back Evans to prison when he caught him at the Golden Lion? Does the final act of foolishness really prove that he was just another good for a giggle gullible governor? That was all. So this question is asking us that the governor who had acted very foolishly, ये हमको भी पता हो गया towards the end of the story that he had acted very foolishly. So the question is asking us कि गवर्नर ऐसा क्या कर सकते थे ताकि वो इवेंट्स को वापस सिक्योरली पकड़कर प्रिजन लेकर आ सकते.
वापस वो उसको गोल्डन लायन से ऑक्सफोर्ड प्रिजन सिक्योरली लेके आ सकते थे. ऐसा वो क्या कर सकते थे. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या गवर्नर की जो फुलिशनेस है उससे हमको ये समझ में आता है दैट ही वॉज जस्ट अनदर फुलिश प्रिजन ऑफिसर. Okay, and he had no real intelligence in his brains. Okay, so let's see. The first question shows us it is asking us what the governor could do. So what he could have done was to he could have checked whether the van and the police officers who had come with him to catch events at the Golden Lion, they were all real people and not just people disguised as police officers. First thing, okay, and he could also have either went with events in that prison, sorry, in that van, वो उस van में events के साथ प्रिजन तक जा सकते थे, या वो किसी रिलायबल ऑफिसर को लेकर आते जो उस वैन में बैठकर इवेंट्स के साथ जाता. सो ये सारी चीज़ों का उन्होंने ध्यान नहीं दिया. हैड ही टेकन केयर ऑफ दीज थिंग्स ही वुड हैव सिक्योरली बीन एबल टू टेक इवेंट्स बैक टू द जेल. Okay, so all these were the drawbacks in his decision making. So the second part of the question is asking us that was he good for a gullible governor. So yes, obviously we all know that the way he acted towards the end, the way he was lenient still, even after knowing that Evans is very intelligent, very clever, and he can run away at the slightest leniency, still he failed in catching him. Even after catching him, he failed in bringing him back to the prison. So it shows that he was really a good for nothing fellow. Okay, so we do agree with the statement that he was a good for gullible governor and nothing else. Okay, now moving on to question number 4. It says, while we condemn the crime, we are sympathetic to the criminal. Is this the reason why prison staff often develop a soft corner for those in custody? So, the question is asking us कि जब हम किसी भी क्रिमिनल के क्राइम के बारे में सुनते हैं तो विथ टाइम हम उस क्रिमिनल के लिए सिंपैथी हमारे अंदर आ जाती है, एंड वी हेट द क्राइम बट वी डोंट हेट द क्रिमिनल एंड वी बिकम सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द क्रिमिनल. सो इज दिस द रीजन व्हाई द prison staff, that is the people in the police, they develop a sort of soft corner for the criminals? Is this the reason? Because we should hate the crime and not the criminal. So we all must have heard sometime or the other a famous saying by Gandhi ji, Mahatma Gandhi, who said that किसी के अंदर की बुराई से नफरत करनी चाहिए, उस इंसान से नफरत हमें नहीं करनी चाहिए. Why? क्योंकि हर इंसान के अंदर बुराइयां और अच्छाइयां दोनों होती हैं. And if we simply hate a person because of one wrong thing that he has done, then it means that we will hate also the good things in that person, because no person is completely good or completely bad. Every person has some good qualities and some bad qualities. So if we simply start hating someone just because he has done something wrong, then it means we have neglected all the good things that were inside that person. Okay, सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें किस बात को बता रहा है, दैट वी शुड हेट द crime, we should hate the wrong act, we should hate the wrong thing that was done, we should not hate the person who has done that, because he is also capable of doing better things, he is also capable of improving. Okay, similarly in this story we see that the prison officers grow to sort of like and have a soft corner for Evans. Like we see Jackson, he has a soft corner, and eventually Stephens also is lenient. Okay, more so because Evans is a petty criminal. इसकी एक और वजह क्या है, that they are lenient towards him because he is a petty criminal. Petty means that उसका जो crime था वो बहुत ही छोटा crime था. It was that of stealing. His crime was not very huge or serious like a murder or some looting or killing or any sort of that kind of crimes. It was simply a congenital disorder which makes him steal
things. Okay, so perhaps it was because of this and also because of Evan's nature, his jolly personality, his jolly humor, which makes the prison officers develop a soft corner for him. Okay, so all this was the reason why they treated him in a lenient manner. एंड जनरली जैसा कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं वैसा ही इस स्टोरी में भी हमको देखने को मिला. Okay, so moving on to question number 5. The question number 5 says, do you agree that between crime and punishment it is mainly a battle of wits? क्या crime और punishment, crime that is jurm and punishment is the punishment, everybody knows what is a punishment obviously. So crime जो होता है कोई भी गलत काम और उसका जो पनिशमेंट दिया जाता है इसके बीच का में जो चीज़ है वो क्या है? इट इज़ अ बैटल ऑफ विट्स. इज इट रियली दिस दैट इट इज़ मेनली अ बैटल ऑफ विट्स? सो what is a battle of wits? It is mainly a mental game where one person outsmarts the other using his brain, using his intelligence. So the question asks the readers that is the difference between crime and punishment simply a play of wits? Meaning whether criminals get punishment or not depends on the wit and intelligence of the prison authorities and the culprit. कि जो उसने जुर्म किया है क्रिमिनल ने उसको पनिशमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स मेनली ऑन अ प्ले ऑफ विट्स. Whose wits? On the wits of the prison authorities as well as the wits of the criminal. कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं. Okay? So the answer has to be yes when we see this in the light of this chapter. Here the criminal events after being in jail. Even after being in jail, he runs away and fools the officers and the police simply because he was using his brain in a more efficient manner. He was witty and he knows how to talk things out and how to fool people, how to win sympathy. Okay. On the other hand, the police fails in catching him even after he is handcuffed by the governor at the hotel because of the foolishness and the lack of wit and intelligence on behalf of the governor and the police. So we do agree that it was mainly a battle of wits from the start till the end in this story. So crime and punishment के बीच में वाकई अगर कोई difference है, so that is a battle of wits and this is proved in this story. So this was the last question, and with this discussion we come to the formal end and final end of this very interesting chapter by Colin Dexter. I hope you have understood it thoroughly and will read it again for a better understanding, because no amount of explanation and discussion can replace your own isolated reading of the chapter. घर में किसी भी कॉर्नर में सुकून से बैठिए, बुक खोलिए और इस चैप्टर को एक फ्लो में पढ़िए फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, एंड आई एम श्योर कि आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा. आफ्टर दैट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड थिंग और इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड explanation or a summary, you can obviously go to the lectures, you can listen to the lectures for a better understanding, but that is a second thing. The first thing is your own reading. Okay, so if you have any questions relating to the chapter, you are most welcome to write them down in the comments so that I can answer them. Okay, so hopefully we will meet in the next lecture with a fresh and final chapter from your syllabus, second year syllabus, that is Memories of Childhood. That is chapter number 8. So until then, keep studying, stay safe. Thank you and see you.